के रिपीट होने से. Now the board is visible to everyone. Good. Take out your classwork copy. Take out your classwork copy. Write down the chapter name and write down the classwork with date. And we are solving. We are continue the chapter number 6, exercise 6A. Okay, Chirag, we will start with question number 8 or 9. Okay, today we will start with question number 8. So the question is 2 upon 3 plus 4 upon 9, 3 upon 5 divide by 1 2 upon 3, then multiplied 1 1 upon 4 minus 1 by 3. अभी मुझे एक बात बताओ कि किसको फ्रैक्शंस इजी लग रहा है. कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनको फ्रैक्शन इजी लग रहा है. फ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कैलकुलेशन करने में. सभी स्टूडेंट को फ्रैक्शन अच्छे से समझ आया. बिकॉज फ्रैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और हमें जब तक मैथ्स पढ़ेंगे तब तक फ्रैक्शन काम आएगा. सो सम चैप्टर्स आर more important than others. So same like the fraction is the most important chapter because everywhere in the maths you can find fraction. So now the question number 8 is 2 upon 3 plus 4 upon 9 in bracket of 3 upon 5 divided by 1, 2 upon 3 multiplied by 1, 1 upon 4 minus 1 upon 3. Clear? Now, according to BODMAS rule, we have to solve the bracket first. So first we have to solve the bracket and we know the LCM of 3 and 9 is 9. So we just multiply the first fraction with 3 and we get 9 here, and then 2 3s are 6 and 6 plus 4 is 10. 10 of 3 upon 5 divide by we can change this mixed fraction into improper. So 3 ones are 3 plus 2 5, 5 upon 3, yes, and then again 5 upon 3 minus 1 upon 3. According to BODMAS, we have to solve off first. It's not necessary कि you can change, you can write the next step और उसमें multiply लिखना. It's not necessary. You can do here, no problem. Don't tell me the answer, please. Yes, what do you say? Sorry. Now it will be 2 upon 3. We can write again 2 upon 3 divide by 5 upon 3 multiplied by 5 upon 4 minus 1 by 3. Now according to BODMAS we can solve this. So 2 upon 3 multiplied by 3 upon 5 multiplied by 5 upon 4 minus 1 by 3. Now you can solve all three multiplication together because we already solved this division. We just reciprocal because if the two number in division we can write in a reciprocal form. Means 2 divided by 3 is equal to 2 upon 3. Clear? So we can cancel here. This 5 and 5, 3 and 3, 2 and this. So it will be half minus 1 upon 3. Now we know that the LCM is 6. So we can multiply this with 3 and this with 2. So the LCM is 6 and 3 ones are 3 minus 2 ones are 2. So it will be 1 upon 6. Is it clear, Chirag? Good. Everyone must copy.
Very nice. And here is a column for the homework. Today's 5 November 20. Question number 9. I think I will solve odd parts. And the homework is the, sorry, I can solve the even parts, and the homework is the odd parts. 9, 11, 13, and 15 is your homework. I will solve with you or even parts only. Now the question number 10. Question number 10 is 5 1 upon 7 minus 3 3 upon 10 divide by bracket 2 4 upon 5 minus 7 upon 10. Now this is the question. 5 1 upon 7 minus bracket start, curly bracket start, 3 3 upon 10 divide by 2 4 upon 5 minus 7 upon 10. Now the bracket close. और I want, don't tell, कोई किसी को आंसर नहीं बोलना है. Do your own solution in your copy. I do my own and you all do your own. Let us see how many students are right and how many students are wrong. Done? हो गया सबका? Now my solution. अब मुझे बताओ आस्था, your solution is right? What is your answer? Hmm? What this one? Tell me the answer. 3 whole 4 by. Change it into mixed fraction. Good Astha, your answer is right. 3 4 upon 7. Good. Nidhi? Good. Very nice. पढ़ने लग गए हो क्या? कितने मार्क्स आए तुम्हारे टेस्ट में निधि? क्यों? ओके ओके, कुछ के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है ड्यू टू द इंटरनेट इशू. ओके ओके, देन दैट इज व्हाई यू स्कोर 8 ओनली, जस्ट पासिंग मार्क्स. टाइम भी चेंज हो गया. और तो तुम 30 मिनट्स यूज कर लेते, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके.
I will tell our director sir to check this problem. But this is not a problem with this app. This is the problem with your internet. So while starting your test, you can make sure that your internet is good, and you can find out the place in your home where the internet is good. There you have to set. Sorry. Now, can I rub this? How many stud? How many students are there? How many students are there? 11. Huh? Whatever 11, 12, but only two students are active, I think. Only two students are active. Two students are able to answer me only. और बाकी जो है वो सब सिर्फ सुन रहे हैं. Now let us write again. Question number 12. 4 1 upon 10. Same thing. I will do my same. I will do my solution. You can do your solution and then check your solution is right or not. Done? What is your answer?
2 upon 1 means 2 only, not 2 upon 1, because if the numerator, if the denominator is 1, we can't represent the denominator as 1. Now this is the solution for the question number 12. Only ask tha. Anyone? Or good? Chirag, what is your answer? Good, 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 good. Nidhi, आंसर बोलो. गुड गुड, मतलब एवरीवन गेट द राइट आंसर. वेरी नाइस. और थोड़ा फास्ट करो अपनी कैलकुलेशन को, और थोड़ा फास्ट करो. मैंने भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया, मुझे लगा कि तुम लोग स्लो कैलकुलेट करोगे इसीलिए. बट आई वांट कि यू कैन. यस. ओके. यस. गुड. दिस इज द बेस्ट वे टू टेल मी. डन. नाउ द लास्ट क्वेश्चन 14. 4 upon 5 divide by curly bracket 2 1 upon 5 minus 1 upon 2 bracket 1 1 upon 4 minus 1 upon 4 minus 1 upon 5, and there is a bar over 1 upon 4 minus 1 upon 5. Then your small bracket finish, and then curly bracket finish. Now start doing. Done? Anyone done? Anyone done? Okay, I'm waiting. I'm waiting to finish you. Very good, Chirag. Just wait, one more student. What is your answer, Chirag? Good. Now see the solution. Good, 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 good. So everyone get the answer 3. तो इसका मतलब है कि सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया है फ्रैक्शन. So I'm very happy कि सबको अच्छे से फ्रैक्शन समझ में आया. If you have a problem in fraction, you are not able to solve this question. Sorry. So today
this exercise is finished and we will start a new exercise. This is a extra, some extra question I will give you. Not 6b. 6b, you have to do your own. I will tell you the square root. I will tell you the square root. क्लियर? मैं यहाँ पर मैं आज स्क्वायर रूट बताऊंगा और एवरीवन must learn the square of learn the square number from 1 to 20 and they must write in the copy also. So 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर सभी को याद करना है. तो 25 याद कर लो, 30 याद कर लो. आई नो बोलने से काम नहीं चलेगा जी. 30 तक कर लो. जिसको 20 तक आता है वो 30 तक कर लो. बिकॉज इट मस्ट बी हेल्पफुल. ये हमारे कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है. इफ वी नो द स्क्वायर लाइक 25 स्क्वायर. अच्छा तुम बताओ किसने बोला था कि जिसको मालूम है? टेल मी द स्क्वायर ऑफ 16. अब कितनी देर लगेगी इसको 16 का स्क्वायर बताने में? व्हाट डू यू मीन बाय 4 into 4? मैंने 16 का स्क्वायर पूछा है, मैं रूट नहीं पूछ रहा हूँ. आई एम आस्किंग अबाउट द स्क्वायर ऑफ 16. 16 स्क्वायर इज इक्वल टू. तो फिर सो यू हैव टू लर्न टिल 20. इतनी देर में तो 4 बार आंसर कर देंगे. हाँ, yes, 256 is the right answer. If 16 square is equal to 256 and if we find the square root of 256 then the answer is 16. Clear? ये बोला है याद करने के लिए. पता नहीं क्यों इतना देर से समझते हो. मैंने बोला स्क्वायर याद होगा तभी तो रूट पता होगा. सो यू हैव टू लर्न टिल 20. सबको लर्न करना है 20 तक एंड इट्स कंपल्सरी टू ऑल. और जिसको याद नहीं होता है वो कुछ अपने लिए उपाय कर ले. ओके, नाउ स्क्वायर रूट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल we know that and there is a method to find out the square root. Method is prime factorization. Prime factorization is the method to find the square root of any. If the number is a square number then you are able to find the square root of any number with the help of prime factorization. But the small numbers we have to learn. Means 36 under root 36 is equal to 6, under root 81 is equal to 6. इतना तो हमें पता है. अंडर रूट 2 अंडर रूट 625 अब हमें नहीं पता कि क्या होगा. तो सॉरी इट्स 9. If we don't know the root of any number, we can use the prime factorization method to find out the root of any number. So it will be 5, sorry, 1, then 2 and 5, then 5, it will be 2 and 5. So you have to write like this, see, 5 into 5 into 5 into 5. You can take common out of 2. So then from 2 you can take one common and here also. So the answer is 25. Means under root of 625 is 25. Clear? Answer will be 25. तो अगर किसी को ये आंसर नहीं आएगा तो ये मेथड यूज करना है. कौन सा मेथड है ये? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड. एंड you have to make pair of the number and you can take out the answer from a pair by taking a common
Out of 2 you can take 1 common, out of 2 you can take 1 common, then you can multiply 5 times 5 which is equal to 25. Clear? Any doubt? कुछ पूछना है तो अभी पूछो. हाँ, अब ठीक है, वो तो बहुत छोटे नंबर्स हैं, ये 6 स्क्वायर ये सब तो बहुत छोटे नंबर्स हैं. और कहीं पे हमारे को जैसे आता है कि सपोज हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर. किया है ना ऐसा क्वेश्चन. एंड व्हाट इज साइड? साइड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए. सो you can directly write side is equal to under root area and under root 441 which is equal to. तो अब इसके लिए क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन. और जिसको याद है वो इस तरह से लिखेगा. क्लियर? जिनको नहीं आता है 441, जिन्हें नहीं पता है, सॉरी, 441 किसका स्क्वायर नंबर है या किसका रूट है, तो दे कैन डू बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ. और जिसको याद हो गया है दे कैन राइट डायरेक्टली. तो ये हमने क्वेश्चन किया था ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज दिस. सो हाउ डू वी फाइंड द साइड? साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया. सो अंडर रूट 441 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. ऐसा क्वेश्चन किया है? 21 एग्जैक्टली. 21 और 20? 21 आई थिंक. ओके, 21 यस. तो वहां पर हमने बहुत बार निकाला. जैसे सपोज और भी हो जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन. सपोज एरिया ऑफ सर्कल, सपोज एक्स वाई जेड वॉट एवर एक्स वाई इज दिस, एंड यू हैव टू फाइंड द रेडियस. तो रेडियस निकालने टाइम में भी हमें करना पड़ता है. ठीक है. रेडियस, रेडियस का मतलब होता है, हाँ, अगर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं तो ऐसे लिखते हैं, रेडियस इज इक्वल टू एरिया अपॉन पाई, अंडर रूट एरिया अपॉन पाई. तो अगर हमें ये रूट समझ में आएगा तो बहुत सारे हमारे बहुत जगहों पे, इन सो मेनी प्लेसेस वी कैन सॉल्व इट मोर इजीली. दिस इज क्लियर? एरिया ऑफ सर्कल वी नो दैट pi r square. So radius is equal to question mark. Suppose the area of circle is given and we have to find the radius. So the radius is equal to under root area upon pi. Clear? अभी जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ. These are the extra question and it's not related to our book. मतलब है टॉपिक लेकिन ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा. You have to do your own. You can, and this is the homework only with same date. Find square root. If you know the answer you can write it directly, but if you don't know the answer you can do the prime factorization. Everyone must write down this question, and exercise 6b you have to do your own. If you are finding any problem, then you can ask within a class. Tomorrow I will start the next chapter. Decimal is done or not, Asta? Yes. Okay, so from tomorrow we will start decimal. From tomorrow
decimal. Chapter number 7. Clear? Don't send that. 6B is not a homework. You can do your own in your book. Don't send to me. 6B is not your homework. You can do yourself. Okay, and don't send 6B in homework. Okay, you can do in your book only, and don't send. If you have a doubt, then you can ask within a class. And this is the homework only for the 5th November. Question number 9, 11, 13 and 15. And you have to find out the square root of these numbers. And you have to learn the square root, the square of the square of 1 to 20 numbers. 1 to 20. If you learnt 1 to 20, then you can move further. 21, 22, 20 till 30. If we learn till 30 ना, तो वो हमारे लिए बहुत easy हो जाता है calculation को करने के लिए. Now it is clear to all.